वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया हियर फ्रॉम GrowingCraft और आज हम बनाने वाले हैं मिक्स मीडिया पैनल. सो येस, दिस इज वेरी सिमिलर टू Decoupage art, but before we start this, please do check out our YouTube channel and do check out all our tutorials and do check out our website growingcraft.com for all the supplies. Now to start with, यहाँ पर पहले मैंने अपने बेस में लिया है स्टेंसिल एंड इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ मेरा मॉडलिंग पेस्ट एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माई पैलेट नाइफ. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर द कंप्लीट बेस प्रॉपरली. À deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. After my modeling paste has dried out, it's time to use my gesso, and I'm going to use my gesso just to make sure that it preps up my base really well for my transfer sheet work. So yes, you can use both the options. You can use your transfer sheets, you can use your decoupage napkins, and you can use your decoupage papers. Whatever the supplies we are going to use are there on our website. You can check that. So this is how my texture work looks like, and now it's time to dry this up properly. Yes, you need to make sure that you dry this up really well. And after that, here I'm going to use my transfer sheet. So for my transfer sheet, I need to make sure that I have the exact design. So I actually love the complete sheet, and there is nothing better than having a beautiful background. So in the same way, you can even use your decoupage napkins also, and जो भी हमने बाद में steps किए हैं, you can do that too. अब यहाँ पे ट्रांसफ़र शीट्स लगाने के लिए फर्स्ट यू नीड टू कट द डिज़ाइन विच यू वांट टू हैव, एंड आफ्टर दैट यू कैन peel off the plastic film. Then you need to stick it on your base, and प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रेस करें. कोई एयर बबल्स या गैप नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टिक वेल. एंड में आई विल ऑल्सो शो यू कि अगर वहाँ पे एयर बबल्स या गैप आते हैं, हाउ टू डील विद दैट. बट प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू प्रेस दिस really well. After soaking it with water, it's time to remove my film, and you can see beautiful. Tada, my base is almost ready. Now अगर आपको चाहिए तो आप इसको as it is भी stick कर सकते हैं with just a coat of varnish, but of course we are going to add a little more drama here. So इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारा varnish, and we have to make sure कि ये अच्छे से press हो. So you can even use your flat paint brush and just stick it well. जो ब्रश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, दैट्स एन एनुकल ब्रश, एंड आई हैव पोस्टेड ऑन ऑल द सप्लाईज लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So here with this, my project is done. I really hope you guys enjoyed this video. Do let me know your feedbacks in the comment section, and thank you so much for watching guys, and take care and bye bye.